India is a land full of a fascinating variety of arts, crafts and textiles, and this Diwali it's been the most satisfying experience to observe that there is a rise in the demand of these traditional crafts products added with a contemporary edge. I think the biggest catch here is crafts, but in terms of also being contemporary crafts, on how traditional crafts, the skill is constantly being modified to perhaps even cater to newer tastes today for customers. I like calling them contemporary crafts. They're not exactly traditional crafts. And one such great example I have here are products here that are made by Uzma. Thank you for being with us. Thank you. I've been noticing the manner in which you've modified very traditional papier-mâché art, which is from Kashmir. Mostly, as we see, the palette is very, very full. Take us through the process on how you had to explain to the artisans of perhaps making it a bit more minimalist is what people like today, you know? Yes, so what we're doing here is we've tried to contemporize the crafts, do the fusion of 2 or 3 crafts together, and we've tried to give different finishes and different techniques with the existing craft. Yeah. Like here you can see we've done the fusion of papier-mâché and the willow craft of Kashmir. Okay. So it's like value addition on the existing willow, so that we're creating new and this more would essentially mean markets. basket weaving, Basketry and The motives per se are quite original. It's just that the placement and the application in a given space is what you've modified. Motifs with. are also not very original. We've combined like the European motifs and the Kashmiri motifs. Colors are different. So the forms and the products, like we've combined for this tray, we've used a different motif altogether, but it's it has those metal handles and more sleek and contemporary looking. Right. So yeah. A lot of traditional papier-mâché products, finishes that come in from Jammu and Kashmir are very glossy. This is how I see them all the time. Yeah. So you say this is a modification. Yes. So this is in matte finish. Okay. So we've done a different technique here. We've done matte finish in papier-mâché this time. So I don't see the sheen in it. Yeah, you don't. But there's a polish. It's polished, but it's all in matte polish. A lot of these products are not just pretty pieces that you put up on your shelf or up on your wall for decoration, but you can use them as well. These can be part of your daily living. I have Shawik with me. Thank you for being with us. Yes. आप अपने आर्ट के बारे में थोड़ा बताइए जो टोकरा आर्ट आया है, जो अक्सर लोग समझते हैं which usually comes from बस्तर, मगर ये शांति निकेतन का है। ये और हमारा ये जो स्पेशलिटी है, इसका जो बारीक काम है, ये आप छत्तीसगढ़ में भी नहीं देखेगा, उड़ीसा में भी नहीं देखेगा। इसका तार ज़्यादा पतला होता है। हाँ, ये पहले वैक्स एंड रेजिन से बनाते हैं और इसको पूरा हाथ से बनता है, और ये जो भी फिगर है वो पूरा आपको ब्रास से हैंडमेड ब्रास कास्टिंग होता है। और इसमें जो हमारा खासियत ये है, जो हमारा बंगाल का जो लाइफस्टाइल है वो इसमें दिखाई दे रहा है। जैसे एक लेडी मछली लेके बैठा है, वो इसका स्पेशलिटी है। तो मतलब इसके अंदर भी आप कुछ डाल सकते हैं, खाना, ड्राई फ्रूट्स, कुछ भी आप सर्व कर सकते हैं इसमें। तो हमारा दोनों भी यूटिलिटी आ गया, तो हमारा फिगर भी आ गया इसके साथ, और उसके साथ की जो भी आप खाना डालेंगे वो भी और आपको खूबसूरत भी दिखेगा। ऐसा इसका इस बात का क्या चलन है, जैसे इस दिवाली सीजन भी ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत दीपावली सीजन में यूटिलिटी है। और सबसे बड़ी बात है, दीपावली में ज़्यादा से अक्सर लोग ड्राई फ्रूट्स के बारे में मतलब सोचते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स कैसे सर्व करेंगे, कैसे किसी को गिफ्ट करेंगे, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स तो ठीक है, उसके साथ उसको दिखाने में थोड़ा अच्छा होना है, जो हम उसको सजावट कैसे उसको दे सकते हैं। तो ये सजावट के लिए ये खासियत हम बनाए हैं। और इसमें आप कुछ भी ड्राई फ्रूट्स डालेंगे तो और भी जब किसी को गिफ्ट करेंगे आप किसी को, तो वो भी और भी खूबसूरत लग जाएगा। एक्सीलेंट। तो आप दूसरे यूटिलिटी प्रोडक्ट में जैसे ये है टिश्यू होल्डर है, ये जैसे है, ये तो सिर्फ आप पीनट्स के लिए है, नट्स डालो, कुछ भी डाल के आप किसी को सर्व कर सकते हैं। और जो आप इसके बारे में बोल रहा है, ये भी इसमें भी हमारा मछली का निशान है, बंगाल का मछली फेमस है, तो इसमें भी मछली किया है। और देखिए जितना बारीक काम है, इसमें आप टिश्यू होल्डर डालो, कुछ भी डालो, तो बंगाल के साथ मछली आना जरूरी है। मछली आना जरूरी है। ये हमारा बैंगल्स है, ये बैंगल्स हम हाथ में पहनते हैं। तो लेकिन बैंगल्स को क्या किया, बैंगल्स को हम सिर्फ इधर अटका दिया। हैंडल, हाँ। तो बैंगल्स को हम यूटिलिटी प्रोडक्ट के हिसाब से वैसे बना दिया। आपका जो आर्ट है यहाँ पे,
ये आपने मॉडिफाई किया कैसे किया? बिकॉज यू सेइंग इट्स अ मिक्स ऑफ ट्रेडिशन एंड आई एम इंस्पायर्ड बाय मधुबनी पेंटिंग। ओके ओके एंड मैं जो मोटिव्स ड्राइव करती हूँ वो बेसिकली फोक मोटिव्स, कलमकारी, वर्ली, इन सब चीज़ों को मोटिव्स को लेकर मैं उसको अपने तरीके से कुछ मधुबनी का टच देते हुए मैं उसको बनाती हूँ। तो उसमें कुछ बॉर्डर्स मधुबनी के हो सकते हैं, कुछ क्लासिकल आर्ट के होते हैं, कुछ कहीं वर्ली के भी आ जाते हैं। और दूसरा मैंने एक और आर्ट देखा करा है विद बस्तर आर्ट, बस्तर फ्रॉम छत्तीसगढ़। तो बस्तर के साथ अपना कुछ काम इसमें किया है, इसमें अपना आर्ट डाला है। तो ये दो आर्ट का एक कॉम्बिनेशन बनके निकला है जो कि बहुत रियली काफ़ी लाइक किया जाए। अच्छा, like I see at your stall, you have trays, you have coasters, you have stands. It's all been transformed into very functional art, जो traditionally उसके फॉर्म में नहीं था। आपने इसको इस्तेमाल किया क्योंकि मैंने जब शुरू किया था जी एज अ मधुबनी आर्टिस्ट, मैंने थोड़ा वर्कशॉप करके तो मुझे लगा पेंटिंग में कितनी बना सकती हूँ। एग्जैक्ट। तो मुझे फिर मैंने थोड़ा थोड़ा काम शुरू किया एंड मैंने इस वर्क से अपना काम शुरू किया। अच्छा। बेसिकली तो ये इसको एक पर्पस दे दिया कि ये थोड़ा यूटिलिटी आइटम्स बन जाए, जैसे कि लोगों की डाइनिंग टेबल तक पहुँचे, किचन तक पहुँचे एंड लोगों के गिफ्ट आइटम्स। एग्जैक्टली। सो दिवाली के लिए आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारे जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं उनको थोड़ा सा कंटेम्पराइज करके उसको ये एक अब ज़रूरी ट्रेंड हो गया है, क्योंकि आई थिंक हमारी पर्सनैलिटी में ऐसा आ गया है कि हम अंदर से कहीं ट्रेडिशनल भी हैं बट हम टोटली चारों तरफ से जब इफेक्ट होते हैं तो हम कंटेम्प्रेरी बहुत सारी चीज़ें फ्यूजन हमारी पर्सनैलिटी में आ चुका है। Now, a lot of you must be wondering how a traditional miniature art which is done on cloth, which are known as pitchwise, can be in demand in this rush season of Diwali shopping. I have with me master artist Sushil. Thank you for being with us, sir. आप कह रहे थे कि क्योंकि एक तो ये भगवान के बारे में पेंटिंग होती है, मगर आपकी डिमांड इसके बारे में इस हद तक आता है that you can actually do corporate gifting for this as well. corporate gifting और डिजाइनर्स जो होते हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स, उसमें भी खास उनका रहा है इस पेंटिंग्स को बढ़ावा देने में। पहले ये मंदिरों में और पूजा के लिए ही यूज़ होता था। आजकल इसमें जैसे कि आप जानते हैं कि है प्योर हेल्दी काउज, जो कि अच्छा भी मानते हैं लोग। और मैंने काफ़ी इसमें इम्प्रूव किए हैं सब्जेक्ट्स। और काफ़ी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स होती थी उनको छोटा भी बनाया है, सिंबॉलिक पेंटिंग्स भी बनाई है और काफ़ी इसमें इम्प्रूव भी किया है। वो आर्ट को लेकर के हम कर रहे हैं काम। और इसमें काफ़ी इंट्रोगेटेड वर्क करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे डिटेल्स देखते हैं, ये तो बिल्कुल ही ये पूरा दिस इज व्हेन इट गेट्स इसमें ये सप्त समुद्र, 7 समुद्र और रामेश्वरम और पूरा रास दिखाया हुआ है। और ये यहाँ हिमालय पर्वत, फिर ये जीवलोक को बताया हुआ है पूरा। ये कॉस्मिक फॉर्म ऑफ कृष्णा बनाया हुआ है पूरा। Do you have any special themes for Diwali season? गिफ्टिंग के लिए छोटी पेंटिंग्स वगैरह ये ज़्यादा लाइक करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी मोस्टली डिमांड इस टाइप की पेंटिंग्स की है। और एक ये हमने बनाया है 3 डायमेंशन पेंटिंग। इसमें बीच में आप श्रीनाथ जी, पूरा फेस श्रीनाथ जी का बनेगा, एक तरफ कृष्णा जी, एक तरफ राधा। People live in smaller houses, so they probably अभी सब तो 6 फीट का पिचवाइस नहीं लगा सकते। उसके लिए हमने साइज रखी है 18 बाई 24 इंटू 18 इंचेस। मतलब 1.5 बाई 2 फीट की साइज रखी है, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई है। जैसे कृष्णा जी के दर्शन हुए, काउजेस हुई, लोटसेस हुए, वो सारी चीज़ें हमने बनाई है काफ़ी। साइज का कितना महीना, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक? इसमें 1 मंथ लगता है आराम से इस साइज में। और ये जो काम किया है उसमें सबसे पहले सिंगल पर्सन 1 मंथ और विद अ टीम ऑफ 2 पर्सन 2 पीपल। यस, ऑलराइट। 2 पर्सन मिलकर के 1 महीना लग जाता है आराम से इसमें। और पहले इसको 100% कॉटन क्लॉथ को स्टार्च लगा करके ट्रीट करते हैं पहले। उसके बाद में कपड़ा तैयार हो जाता है, फिर इसकी गुटाई होती है। उसके बाद फिर ड्राइंग होती है, फिर कलर फिलिंग होती है। और कलर फिलिंग में भी आपका दे हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस ऑफ मेकिंग कलर्स, वेल यू क्रशिंग स्टोन्स एंड क्रशिंग मटेरियल, ऑल नेचुरल स्टोन कलर्स यूज होते हैं सारे इसमें। और रियल गोल्ड एंड सिल्वर भी यूज होता है सारा, जो फेड नहीं होते हैं कलर्स भी। और रियल गोल्ड एंड सिल्वर भी फेड नहीं होता है। सबसे पहले ग्राउंड बनता है इसमें, उसके बाद फिर ग्राउंड कंप्लीट होने के बाद में पेड़ बनते हैं।
उसके बाद फिर landscape filling होती है। फिर कपड़े वगैरह फिगर्स जब शुरू होता है तब सबसे Right. पहले क्लॉथ बनते हैं। उसके बाद में फिर फेसेस वगैरह ये सब चीज़ें बनती है, आउटलाइनिंग वगैरह सब कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में फिर जो मोती वगैरह वो सारा है इनका मेकअप वो कंप्लीट होता है। देन सबसे लास्ट में बनती है दुपट्टे और चुन्नियाँ। तो आप अभी देखेंगे तो इसमें ये चीज़ नजर आएगी आपको कि चुन्नियाँ ट्रांसपेरेंट बनी हुई है। So I'm at this very exciting place, which is once again tried to reinvent our traditional, but more importantly, tribal folk art. And the manner in which she's contemporized is fascinating. I'm going to take you through some of the highlights of this with each product with Uma. Uma, I must say, you're doing a great service to the crafts. In terms of the color themes or the placement of motifs and all, it's far more spaced out or minimalist. Yes, it is minimalistic because that is what particularly, because that is what people are really looking for now. I mean, it works well to put into a certain price budget as well. You know, where there is the work is there, but it is minimalized, and also that fits into our contemporary scenarios much better. Okay. What about the color themes? You think because it's become more solid in colors? The colors are more muted. I don't think I would find this in original tribal. Yes. So we do play around with colors, but then it depends from art to art. Like the Gonds always, since they let their lives around the forest, they've also always painted a lot of the forest. Yes. So the trees and the animals is always there in their range. And they play around with color in any case. And also these tiny drawer boxes, of course, which are fascinating and cute in their own sense. People sort of love to buy these to keep their jewelry. Little girls love it. It's nice to keep it on your bedside or on your writing table. So I think right now this is fitting in very well because I have had a fair amount of inquiries of people wanting them in large numbers. In fact, one has to now gear up to be able to do that. To mass produce, that becomes another challenge because since everything is so limited and exclusive, it's all hand done, it's all handmade, it becomes a challenge to scale it up as well. But I think that in itself scaling up is not such a challenge because we have a number of artists, but it means that you have to work with them over a long period of time, because even to get to this level with the artists that I work with has taken me a few years. The inquiries are to the extent even curious about where this is coming from, what this is. Yes. And in fact, I may not have it on all my pieces because they generally do forget to do that. But I make the artists sign their names. I know, on a particular, I've on seen their pieces. that, like this one here. So you have, and this is quite literally a limited edition exclusive work of a tribal artist, So you can actually, this is what I tell people when they buy here, that this is Pushpa Kumari. You can Google her and see, and where her paintings are in museums across the world. So these are people who are well renowned. It's just that they haven't got the kind of due or mind that they should have. How can Diwali, the festival of lights, be complete without diyas, candles and lamps? All of that and much more exciting stuff in just a bit. Well, it's not just about the utility items of functional art, it's also about dressing up. In Diwali time, traditional textiles, crafts, jewelry, all of that you get in this wonderful world of crafts. After all, what really is Diwali without shringar and dressing up and talking about clothes and jewelry and accessories? So we're going to be doing just that, but once again with an edge, different jewelry. One that has been done in traditional Ladakhi stone as well, but has been modified for jewelry pieces, for handbags, earrings, and some very interesting neck pieces. हमारे साथ तोपके हैं। तोपके जी, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आपका जो लद्दाखी स्टाइल का जो ज्वेलरी है, जो महिलाएं पहनती हैं, हेवी स्टोन वर्क और सब, यहाँ के दिवाली बाज़ार के लिए, सिटी के डिमांड्स के लिए आपने कैसे चेंजेस किए अपने? वो वैसे तो ये इस साइज़ का होता है जो असली, जो टर्क्वाइज रियल होता है। अच्छा। और कोरल
ये सब रियल होता है। तो वो तो अब लगभग ख़त्म हो गया। अच्छा। अब उसी को हमने बना के आर्टिफिशियल बना के देखा, अच्छा। तो बिक रहा था, तो फिर हमने उसको थोड़ा पतला कर दिया। किसी ने मांगा कि थोड़ा पतला हो, फिर किसी ने कहा कुछ बड़ा हो, ये बड़ा बन गया, उससे बड़ा ये बन गया। मगर ये भी सब बीड्स का ही काम बीड्स है ना? का है। अच्छा। तो मगर ये तो आप कह रहे हैं असली पीसेस का थोड़ा मटेरियल बदला है। बाकी सब अगर ये देखें हैंडबैग्स, ये तो नया पीस हाँ, है। ये नया पीस हमने अपना दिमाग से, लेकिन बीड्स जो है मतलब कि लद्दाखी बीड्स कहते हैं, टर्कवाइज वगैरह वो लगा के हमने बनाया ये बैग। So this makes for a very fascinating, I would say, traffic stopping statement piece of a handbag, because it comes with a very traditional pattern of art, and once again makes for great Diwali gifting. Diwali gifting के लिए बहुत पॉपुलर रहा है ये। वहाँ वो बॉक्स है एक, ये बॉक्स जो है बड़ा वाला, ये बॉक्स लद्दाख में लकड़ी का होता है। उस पर डिज़ाइन किया होता है। हाँ। लेकिन अब लकड़ी का तो काम ख़त्म हो गया, तो हमने उसी को फिर बीड्स में बना दिया। Jewelry This is box beautiful. The pattern, a jewelry box. Really, it's once again a question of carrying tradition back home. More importantly. ये है फिराक, अभी भी पहना जाता है ये। अच्छा। ये लेडीज़ यहाँ से नीचे को पीछे जाता है। Right. तो ये होता है कि जिनका जो फर्स्ट बड़ी वाली बेटी होता है जी, उसकी शादी में ये ज़रूरी है। इसके बगैर अच्छा, मतलब कि नई शादी नहीं, ये पहना। अच्छा। तो उसकी लड़की होगी, लड़की की लड़की होगी फर्स्ट वाली, उस तरह ये खानदानी चलता रहता है। जी जी। तो एक ही बना के कई खानदान चलता रहता है। So I'm here at the stall of Kanta art, which is from a village in West Bengal, Birbhum, and I have Shalini here with me. Thank you for being with us, Shalini. आप बता रही थी कि ये जो लोग ले जाते हैं दिवाली शॉपिंग के लिए, किस टाइप से पैक्स में मांगते हैं या लिमिटेड एडिशन का मांगते हैं? कैसे? काफ़ी ज़्यादा मांगते हैं क्योंकि इस टाइम पूजा ट्रेडिशनल लुक आता है और हैंडमेड है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही सेल होता है इस टाइम। फेस्टिवल सीजन में ज़्यादा होता है इसका काम। हाँ, विंटर्स में ज़्यादा होता है इसका। Let me also, if you could close in a bit, I'll tell you how it is done. It's done stitch by stitch, knot by knot. Each tick that you see here is done by hand. और एक स्टोल, जैसे इसकी तो साड़ी भी बनती है, मगर अगर स्कार्फ और एक स्टोल ले तो वो कितने महीने का बना होता है? ये एक दुपट्टा बनाने में 2 महीने 2.5 महीने लग जाते हैं, क्योंकि कितने लोग बनाते हैं? एक ही लेडी बनाती है। और विदाउट स्केचिंग वो पूरा फ्री हैंड में बनाती है, स्टिच करके। मतलब ये पूरा पैटर्न, this entire pattern that you see here, none of it is sketched out. It is all done freehand by the calculations of one artisan who's embroidering this. So this is what ये सबसे पुराना tribal art. It's about, इसमें एक विलेज की लाइफ होती है ना। I mean, quite effectively, this entire piece of cloth is also giving out what a village life is all about. Being close to nature, animals, huts, people, of course animals playing a very major role. So this is a traditional piece, and this is how it has been contemporized in maybe just restricting it to geometric patterns. I guess that's what people are liking today. But तो इसमें आपने ऐसे इसको ऑल्टर किया है, ऐसे मॉडिफिकेशन ऐसे ही होता ही चला जाता है डिज़ाइन के ऊपर। ये वॉल हैंगिंग देखिए, इसको 2.5 साल लग गया बनाने में। अच्छा। ये इसमें पूरा रामायण पोर्ट्रेट करा हुआ है। अच्छा। Interesting set of jewelry that we've come across, and Kiran is going to be telling me about her design and patterns here. It's an incorporation of traditional silver work, hand weaving,
and mother of pearl being used in very contemporary style. Firstly, I have started with the silver and the semi-precious stone. Okay. And this year I have introduced an absolutely new concept. It's the mother of pearl, which is the ancient thing, which is known everywhere. And I think nobody is working so much on the mother of pearl as this time I have. But these are quite literally statement pieces, right? Yeah. They are statement pieces. And also the way they've been woven with the use of thread. This is the thread, and in this thread I have used a very good quality thread, anchor thread. So let's look at this piece. It's an interesting work of thread and bead which is done on the mother of pearl, and then again you have a creative use of thread that is woven and jasper pieces of stone that are interspersed in between, and this is the result that you get. People who likes to take this type of thing. Right. It's very specific. Everybody does not like I this know, jewelry. but you think this is working for gifting this Diwali? Yeah. You've added Really? Ganesha to this as well. Yeah, it is working. It is working well. This work is done in Andhra using only vegetable colors, natural dyes, no chemical. All right, so this is traditional kalamkari which comes from Andhra, but of course we're much used to an intricate, smaller pattern. No, kalamkari is always, focused on a tree of life with peacocks. Yes. See this. Do you see a peacock dancing? Yes. This is all vegetable. It takes 3 to 4 months to finish a sari because the process is very labor intensive. People sometimes ask me why is it so expensive, but there are a lot of people who, when we educate them what it is, and if an artist has taken 4 months to complete one sari, of course, then it is not expensive, because you see that the minimum wage is even not given to the artist. And the kind of labor that goes, I mean, it's intensive work. It's intensive work, and then you look at the fabric we have used, because these are heritage art pieces. You are going to cherish them all throughout your life. See this. See the work. Absolutely. Yeah. See. Take a look. It's exquisite, and it's all hand done. All so hand they're painted. doing it with a rather thick brush. They do does a it kalam. Yes. These kalam. days also, not a pen. Okay. वो जो लकड़ी की दातुन वाली कलम, उससे it's done with a wooden the wooden nib, a kalam wooden से pen. they make the outline. So do you see that this is not uniform? Yeah. This outline is done with charcoal. So what has been the process, if I may ask you, as I've been asking other stall owners as well, of briefing traditional craftsmen on working on a new palette? Yeah, so this is this is the when we say that we are going to contemporize it. Yeah. See, this is what, if left to them, they will only make one design and a typical palla. Yeah. So we tell them no. You Space it out a bit. Yeah. And make it different. Bring a different color here. This is how lovely. This is contemporary. This is contemporary. This is contemporary way of ajrak. See, ajrak is generally done in these typical prints. I'm going to be explaining it to our viewers. This is what that comes from ajrak, which is yet another exhaustive dyeing and bleaching process. This is what the traditional pattern or what you see here. Contemporary designs in ajrak. This is a dupatta. Yeah, sure. Beautiful. Gorgeous, and this is ajrak. You can't imagine. And this is modal silk. Modal silk it feels and looks like silk, but it is 100% cotton. Okay. So it's handloom and cotton. See. How challenging was this? Because this is an entirely new pattern for the Absolutely new. Very, very, very new. Yeah. I do a lot of shibori work. Yeah. So I decided that I should do something new. So shibori, and this is going to be my next range. So this is a combination of shibori. If Two you arts. explain shibori, Two which arts. is Japanese style, right? Yes. Interesting. But it's very tough. It is very difficult. Yeah. Because when these artists are working, they have to respect this space and not spoil it. Exactly. And when they work, they have to respect what is done there. Wow. So this is you quite need an master artist to do it. Ordinary and it's artist. also a coming together of two worlds, of two different skills. Yes. It's beautiful. Yes. It's really. I think it's a very democratic piece. Yes. A lot of people have told me it's a revolution. It's a revolution, exactly.
traditional work which have perhaps not even entered the urban city is now getting a new lease of life? Yes. So that's what we thought, that people have enough of showpieces in their homes, and you can only buy so much showpieces. Right. So we thought that we'll get them into utility products so that we can increase the demand. Okay. And only when the demand increases can we think of reviving this, because that's how we'll generate work, and that's how more and more people will enter craft sector. Yeah, and what's the pace like for if I could please pick this, which is relatively a larger piece, a more intricate tree pattern here, as you see. This is in Mathura. This is in Mathura. Yeah. So there are just 3 artisans left, and we are trying to revive this craft. That is why we try to put it in lamps, trays, coasters. How much time would this one piece? It's of course a much smaller scale of working that they used to, but still, how much would this take time? This takes on an average 3 days to be made. Because this is done on paper, I find that in Diwali, this becomes one of the most popular form of arts, because it's used for lights. It's been used in that manner. So it just makes a whole lot of sense of having Sanji for Diwali in that sense. Yeah. Sanji in itself is a really beautiful art. It is, Yeah, so there is a lot of scope of making really awesome products using Sanji. So we are just doing as much as we can, but we know that the potential of this is much more. So I've had an entirely interesting day full of some beautiful pure arts, which is entirely handmade and close to earth, close to nature, close to us, the heart of India. I hope this has been an interesting journey for you as well, for reintroducing arts and crafts to your life. Happy Diwali!